और AFR 50% हो गया है, और ऑडिट में मतलब कंटिन्यू करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। ओके। तो लगभग हो जाएगा सर, इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, मार्च में। ओके, हाउ मेनी आवर्स आर यू स्टडिंग फॉर द डे? सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन सर? कितने कितने घंटे पढ़ रहे हो रोज? सर कई टाइम नहीं होता, मतलब पढ़ता ही रहता हूँ जब भी, बाकी टाइम में तो जब भी फ्री होता हूँ जैसे भी। आइडिया 14-15 घंटे। नहीं नहीं, इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता, लेकिन वही 10-12 घंटे हो जाता होगा सर। Okay, ठीक है। I'll get back to you again to explore a little of how you are doing and what is it that you might need to change. ओके सर। Okay, stay online. Devang, back to you again. कौन सा टेस्ट डिसाइड किया? सर ट्रस्ट का देता हूँ। कौन सा? ट्रस्ट ट्रस्ट? यस सिर्फ सर। ट्रस्ट? कम ऑन यार, छोटा सा है ट्रस्ट, कुछ और भी साथ में ऐड करो। आईडीटी का देता हूँ। I need to trust on you, my friend. Add some more trust. लास्ट कौन सा चैप्टर पढ़ा था ट्रस्ट से पहले? आईडीटी कर रहा था सर। हाँ, डीटी में। डीटी में कैपिटल गेन। गुड आइडिया। आज नहीं कैपिटल गेन देंगे, परसों। अरे यार, नेहल, डिड वी डिसाइड फॉर अ फुल टेस्ट फॉर देवांग? वाज ही देयर? No, sir. You don't have any test on 5th of March, right? नो नो सर। Come on. So DD फिनिश हो चुका है ना? नहीं सर, आईडीटी खत्म हो। आईडीटी खत्म हुआ है? हाँ सर। पूरी तरह खत्म हो चुका है? हाँ पूरी तरह। तो नेहल, यू आर गिविंग डी आईडीटी। Yes, sir. कूल। देवांग, आप भी 5th को आईडीटी का फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। सर ये क्या कर दिया, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सर। So नहीं like नहीं सर। what I'm trying to do is give a kind of surprise shock, so that you start to feel the last days of exam. And अगर 5th को हमारा ग्रुप 2 शुरू हो रहा है और ग्रुप 2 का पहला पेपर आईडीटी है, तो आईडीटी की प्रिपरेशन करनी जरूरी है, तो पार्शियली उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो। माय एक्सपेक्टेशन इज नॉट 80 marks, my expectation is 50 plus. So as the question that I asked every day yesterday, as of today, whatever you have prepared till today, on a scale of 1 to 10, where would you rate yourself in terms of marks that you can achieve in IDT? अगर कल एग्जाम देना है तो आईडीटी के कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो? 1.5 दिन दे दूं? अगर मैं कह नहीं रहा हूँ परसों देना है, सोचना है सिर्फ। हाँ हाँ सर। परसों पेपर है, मतलब आज 2 से 5 एक पेपर दे के 5 बजे के बाद आप फ्री हुए, तो परसों 2 से 5 फिर से पेपर है। लाइक हाउ कॉन्फिडेंट डू यू फील ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? व्हाट डू यू थिंक यू विल बी एबल टू स्कोर इन दिस 50 1.5 प्लस डे? 50 प्लस आ जाएंगे सर। 50 प्लस। और अगर मैं 5 तारीख तक का टाइम दूं, another 4 days? ट्राई करता हूँ सर एग्जामिशन का। एग्जामिशन? हाँ सर। कूल, ठीक है। 5th को यू हैव आईडीटी फुल सिलेबस टेस्ट, यू हैव द टेस्ट सीरीज विद यू ऑलरेडी फॉर दैट? यस सर। तो ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट सीरीज वाले ये रोकते हैं कि पहले फुल सिलेबस नहीं दे सकते और बाद में ही देना है? लाइक नहीं, मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी यूनिट टेस्ट दे दिए सर। चैप्टर मेरा वाइज था। दे दिए हैं सारे? हाँ हाँ दे दिए। वंडरफुल, फिर तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर 5th को आईडीटी। हाँ। आई होप यू आर नॉट गोना स्किप दिस टेस्ट। नो 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 सर। आईसीआई दोबारा टेस्ट नहीं लेगा, फिर 6 महीने बाद लेगा। नहीं, अब भी करना है। आईसीआई ने 5th of March डिसाइड किया है आईडीटी के पेपर के लिए। हाँ हाँ डन? डन। कूल। बट प्लीज यार, सेल्फ टेस्ट छोटे छोटे दे दो रोज। हाँ दे दो सर। 30 minutes, all it takes is 30 minutes, just 30-40 minutes spend on a test, single test से शुरू कर लो। ओके। How have your tests so far gone, the previous test that you have given from the test series that you have taken? आईडीटी में Hmm. इट्स लाइक 40 मार्क्स में आई हैव रिसीव, मतलब आई गॉट 26 मार्क्स। Okay, so that's like 60%, 60 plus. So most Yes. of the test कितना रहा है average? उतना ही सर, 25 to 30 अप्रोक्स। Okay, but that's not good. You need to improve it. So I'll suggest कि 5th को जो टेस्ट है, try your best that you are able to score above 70. Try your best, ठीक है? But then please give a self test every day that's just gonna add on to your confidence of DT. You're studying DT right now ना? ठीक है, आज ट्रस्ट का टेस्ट रहेगा। Done. Yes. और कैपिटल गेन्स का 2 दिन बाद। ठीक है। ठीक है, so we'll start slow with you. I mean, you are the first inceptor of test series. The person who helped me incept this idea was you, and somehow the person who has not applied it till now is you. कर दे। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच तवांग। आप पढ़ो प्लीज, कंटिन्यू करो। नेहल, हाउ इज इट गोइंग टुडे? Sir, till morning it was good. 8 के बाद सर थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। लाइक व्हाट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस? सर इधर उधर ऐसे, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, वैसा चल रहा है। तो घर में इधर उधर क्यों जाना होता है आपको? सर वो कभी कभी मम्मा को कुछ रहता है तो कर देना पड़ता है सर, मना नहीं कर सकते, नहीं तो घर के ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बाहर इससे आपने मुझे एक बात याद कराई। आई नीड मे बी 2 minutes फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू डू अ स्मॉल फेवर टू योर मदर। इफ इट इज पॉसिबल नाउ, you can get up now and just go and say thanks to her, because the level of effort she is doing for all of you is uncomparable to anything in life, and it goes unappreciated most of the times. On a daily basis, anything and everything that she is doing is because of which you all are able to study throughout the day. So if possible, Thank you. and you do think you can get up and just go in 2 minutes, just thank her and come back, I'll wait for you. Can you all do that? तो मेरी मम्मी तो सो रही है, मैं जाऊंगी तो गाली खाऊंगी। You can do it later, but do it, please do it. पक्का।
I want you to essentially do it. Nehal, your mother was around. Yes. You did say thanks to her. Yeah. Thank you. Thank you so much. Dipesh, Riddhi, अगर मैंने थैंक यू बोल दिया तो वो अलग ही लेवल पे चले जाते। क्या होगा? नहीं, लास्ट टाइम किया था मैंने, मतलब एक बार 12th में हमारे सर ने ऐसे ही डांट लगा के बोल दिया था हमको, एक बार घर पे जाके थैंक यू बोलो कि आज तक आपने जो जो किया है उसके लिए, फिर समझेगा बोले आपको कि तुमसे कुछ उम्मीद है क्या उनको। मैंने वो किया, उसके बाद में मुझे ही फटकार पड़ गई थी तो वो वापस नहीं कर Okay, सकता मैं अभी। it's okay. Still, you're doing best, and I'll still say, see, the fact that फटकार पड़ गई थी, I mean, they probably expect a lot from us, and we are not doing it. Somehow, we are missing it out. I mean, when we go and thank them, it's only gonna add a better emotion to them that you do appreciate and understand. As नहीं much सर, as डांट पड़ रही है, नहीं नहीं बोलना चाहिए। क्या? हाँ, वही मैं डांट बोल पड़ रहा हूँ। रही है, नहीं बोलना चाहिए। नेहल, you are saying कि दीपेश कह रहे हैं डांट पड़ रही है, ये नहीं बोलना चाहिए. को भी डांट पड़ रही है। हाँ, मेरी मम्मी बाजू में इधर ही खड़ी है, शी इज स्कोल्डिंग मी। Scolding you on what? बात करो ना। नहीं। I'm not able to hear you. नेहल कह रही है, अभी नहीं, रहने दो, अभी सर प्लीज रहने दो, बाद में करेंगे, और ज्यादा पड़ेगी। कोई बात नहीं दीपेश, ट्राई करना, थोड़ी डांट खा लेने में कोई बुराई नहीं है, बट स्टिल पेरेंट्स को थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। अंजू, कैन यू डू दैट? सर, आई कीप डूइंग दैट। No, I will definitely do that, but I will do right after the session. Done. Anshika, please do that today. Sanjeev, you too. Ankit, are you there? Ankit in a different universe. Okay. Anju, how is it going today? You started late. I was expecting you to join by 7:30 or 8, as you mentioned. Yeah, actually, I started around 8, but I was doing a little bit of planning. I planned to do deduction chapter, a little bit of the important deductions. Then I just went through the question papers, so it took a little bit of time. I was going through the question papers, like 3-4 question papers, just to see what all questions are being asked. Your voice is not clearly audible. Am I audible now? Is it better now? Yeah, it is. So it's like searching. I think I lost the track of studies a little bit, and now What were you searching? I just wanted to see through the question paper. Okay. And Just to know like what all areas I have to cover more, to know the weightage. Every now and then I just whenever I go to a chapter, I simply go through the question paper to see like, okay, what are the you questions? mean the question bank or the question paper? Past year question paper. Why do you not just follow a question bank? Yeah, I have actually. Does But it have marks allotted to every question visible there or not? yes, it has. Then you have it available there only. Why do you need to go to a paper to really, try to search around the questions for the specific chapter? Yeah, actually, I planned to check for that specific chapter, but I ended up going through the entire question paper. So I suggest don't do that because that's going to waste your time. Yeah, I actually. mean, if the question bank has already the questions that you're supposed to look at and with the marks, there's no need to roam around more places. It's eventually going to exhaust you, and your time is not going to get utilized in an effective manner. Yeah, that happened in the morning. And if you're like, and for me, if I keep a target and if I don't get it, like I actually planned to finish deductions chapter in the morning, but I ended up doing something else. So it was like difficult to get back on track. But yeah, I started going through the concepts now and almost halfway through the chapter. Okay. I like to have a visual of whatever your schedule is for the coming sometime. DM it to me on Telegram. I like to have a look and understand what is your schedule for the day. Okay. Okay, continue. Do say thanks to your mother. Of Sorry, course. not pade. No. She'll be like, why is she thanking me today? What does she need? I mean, we are supposed to appreciate them. Come on. Yeah. They do it so selflessly, but at the same time, I mean, I understand. डांट पड़नी जायज भी है कभी कभी. लगती thanks की आते हैं तुझे. Yeah, it's like a silent, she knows I appreciate her. So I feel like, okay, no need to tell her specifically. She knows that I appreciate No, her. we must tell that there comes a day in life suddenly when something very unexpected happens in our life, where something happens to our parents, and we miss out on the important element of life where we must have thanked them. So वो छोटा छोटा thanks बोलने में, you people are not gonna get reduced on energy, rather it's gonna only add up. So your parents are also supposed to get used to it because they're not used to it. You people saying thanks, like ये कौन सी दुनिया की बातें हो रही हैं? I had been very habitual of appreciating my parents every then and now. Whenever I would, something or this or that, every other week, I would just share my love to them. And that's essential because someday, again, as I mentioned, my father is not there. He passed in 2019. And every other day, there is something I
remember of him. I talk about him in all my talks with most of the people around me. I talk about him because I believe anything and everything that I have become, the kind of person I am, is one of the greatest contribution by my father. It's like I'm following his footsteps. वो appreciation में उन्हें बहुत देता था, but still I feel the lack that if I wish I can give it even today. So please, Rose, appreciate करो. It's important. Your life is gonna be more positive. Anshika, how is it going today? A bit slow. A bit slow. Pace it up. Energy drink भिजवाऊं? नहीं sir, I will pace it up. You'll pace it up without an energy drink? हाँ जी sir. Okay. It's 1 o'clock till 5 o'clock. How many hours, everyone? Separate 5 hours में कितने hours fetch किए जा सकते हैं? 4 hours is good. सर 4 ही आवर्स है ना? Till 5. Oh, sorry. Till 6. Till 6. हाँ 4 hours till 6. Everyone, possible? Anju, can you do that? I want to take a break after lunch, to be honest. How long? I want to sleep 1 hour, 1.5 hours. Okay, then you can achieve. Nehal is happy. I have a friend who sleeps in the day. Yeah, I don't know if I'm like getting used to that, but I feel like when I sleep, after the sleep, my brain works more fast. It will work, but then you don't need to have a longer nap period. Naps should be good. Power naps should be taken, but then, I mean, if you have not, done with the previous night's sleep, then obviously you can take longer sleep breaks. Otherwise, 15-20 minutes more than sufficient होते हैं to, re-energize your brain. Yeah. I'll try to reduce the nap hours. I mean, if you can, if you have slept nicely previous night, then it is not needed. Then it is just a habit, nothing else. Like I take 7 hours of sleep and then throughout the whole day, I don't need a nap. I don't feel even drowsy throughout the day. मेरी energy यही रहती है रात तक. So try it if you can. Okay. Riddhi, how is it going today? Okay. Up for the Okay. exam? Okay. Stress levels up? Yes sir. Panic attacks, anxieties? थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है. अभी से हम कर लेंगे तो फिर पेपर्स में नहीं होगा. कल पेपर है ना? Yes sir. Ready for it? Trying your best? Trying my best, but I'm not ready. कोई बात नहीं. It's important. When you're not ready, then giving the test and understanding where you stand while you feel all the days that you have studied was something with which you may have scored good, and suddenly when on your head comes an exam, you're like, ये क्या हो गया? ऐसे ही एग्जाम सामने आता है अचानक एक दिन. Isn't it so? We keep preparing and suddenly we realize shit, exams आ गए. What do we do now? और तब बस उसी 1.5 day में prepare करने पड़ता है. So I was asking her the previous day, अगर एग्जाम्स आप लोगों का फर्स्ट एडवांस अकाउंट्स का रहता है, उससे पहले आपके पास कितना टाइम रहता है to prepare that paper? 7 days. You mostly would take 5-7 days to prepare that exam. Post that, बाकी एग्जाम्स में कितना टाइम है? 1.5 day for every exam, nothing more. So every exam that keeps passing by, वो आपने almost 20-30 days पहले पढ़ा था probably. ऐसा ही होता है ना स्नेहा? Almost 20-30 days पीछे ही पढ़ा होता है. 15, 20, 30. Now when you are supposed to give that exam, you will recall all that memory of 20-30 days old in 1.5 days. अगर वो है तो फिर अभी भी सेम चीज होनी चाहिए ना. अगर हमने खत्म कर दिया तो कर सकते हैं. वही ट्रायल्स देके देखने हैं. So like you are supposed to get prepared with that 1.5 day of preparation every time, and every few days this will keep happening with you. Okay? अभी तो सन्नाटा हो गया है. Ankit, are you there? Ankit still in another universe. Okay. Anyone needs to ask anything specific? Paper का stress sufficient है आप सभी के पास? Cool. Sneha, did we decide for a paper for you on 5th March? No. What have you done so far? Which subject have you finished? DD and IDD both are finished. कोई भी नहीं सर. दोनों फिनिश हो चुके हैं आपके. All नहीं. classes done. All नहीं. revisions done. DT तो आज तक छुआ ही नहीं. IDD? IDT चल रहा है. 20-30% हुआ है बस अभी तो. चलो, I'll decide separately with you. But I want you to give a paper on 5th. So I'll decide maybe today. You decide and let me know, okay? 5th तक क्या हो पाएगा? क्या हो पाएगा मतलब? मतलब कैसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ऐसे तो मेरा कि मैं 5th तक रेडी कोई हूँ. बात नहीं. मैं 30, 40, 50% जितना सिलेबस हुआ है उसका पेपर दे दूंगा. देखती हूँ. कोई बात नहीं. दिस इज नेसेसरी. ओके. नेहल, आईडीटी दोबारा ट्राई किया टू रीड इन अ डिफरेंट मैनर? यस सर, जो लैंग्वेज थी वो अंडरलाइन करी और सुबह उसको वापस से रिकॉल किया. द सेम चैप्टर व्हिच आई हैड अटेम्प्टेड लास्ट नाइट. वो सुबह उठ के रिवाइज वो लैंग्वेज पढ़ ली एंड देन आई स्टार्टेड विद प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस. वो भी उसी मैनर में किया है कि जो प्रोविजन है, हाईलाइटिंग द प्रोविजन एंड रीडिंग द लैंग्वेज. और नाउ आई एम डूइंग कस्टम्स का लेक्चर वैल्यूएशन. सो टुडे आई विल बी डूइंग 2 टेस्ट, वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. Okay, so you are feeling somewhat improvement than before? A little improvement? Main, I think it will help if I do 2-3 times more because then Yeah. only the language आ पाएगी. Yes. Right. वो language तो hold तभी होगा. The more times you reiterate it, the more times you re-revise it, the recall का जो capacity है वो अपने आप increase होने लगेगा. हाँ, वो 2-3 बार पढ़ने के बाद Yes. वो लैंग्वेज आ पाएगी. Yes, मुझे but then every time you must look at this that the time taken to revise should keep reducing.
इन द फॉर्मेट ऑफ लर्निंग कर्व, पहली बार ज्यादा लगेगा, दूसरी बार कम, थर्ड टाइम और लेस, और जितना जल्दी कर लोगे उतना कम टाइम लगता जाएगा. तो यू हैव टू यूज दैट वेरी मच, टू योर बेनिफिट. द अर्लियर यू रिवाइज द बेटर इट इज. ठीक है, 6 o'clock तक 4 hours we are expecting. Anju, you can also try. I mean, if you are able to, and all the best, study very well. If there would be anything, please send a message in the group. Thank you. All the best, study very well. Thank you, sir. My pleasure, Dipesh. Say the thank you to your mother too, please, with all the dant fatkar that you can get today. I'll be happy to hear it. Whatever your mother says, record it. No, sir. चलो ठीक है. Okay, take care.